In this chapter fraction, we have seen types of fractions, we have seen equivalent fractions, and we have also seen the like and unlike fractions. Now in that, I said that these like fractions, this topic will be used when we are doing the operation, and also it will be used when we are comparing the fractions. So if unlike fractions are given, we'll have to convert them to like fractions, क्योंकि unlike fractions हम लोग उसको add नहीं कर पाएंगे. To add them, to compare them, to subtract them, we'll have to make them like fractions. How to do that? That we are going to see here, and in that we are going to use the equivalent fraction का concept. So therefore that we have done, we have seen all those things. Now if two fractions are given, say 3/7 and 4/5. So यहाँ पर we can see denominators are different, means they are not like fractions. But if we have to add them or subtract them or compare them, we'll have to convert them to like fractions. So how we'll be doing? Let's see. Now, first thing that we have to do, एक चीज तो ये है कि we are going to make equivalent fraction of this fractions. Equivalent fractions क्या थे? हम लोग numerator and denominator को we multiply them with a non-zero number. जीरो को छोड़ के किसी भी दूसरे नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट दी सिमिलर फ्रैक्शंस मिलते हैं, इक्विवेलेंट वैल्यू वाले फ्रैक्शंस मिलते हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट स्टेप है फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर्स क्या है? यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हमने लिए पहले से, सो इट कैन बी मोर देन टू फ्रैक्शंस आल्सो. 3, 4, 5 जितने भी फ्रैक्शंस हो, all fractions denominators will be finding the LCM for those denominators. Here in this case understanding के लिए दो लिए हमने 7 and 5, इनका LCM है. LCM मेथड हमने देखा हुआ है, if needed will explain when needed. यहाँ पर these two will be multiplied. I'll take more examples जहां पर LCM फाइंड करना कैसे वो भी सिखा दूंगा. So that is first part. LCM हमको मिल गया 35 is the LCM. Now this LCM, what we have to do with this? We have to make this denominator. ये जो denominator है इसको हमको 35 करना. We have to make these denominators 35. So how we are going to do that? Equivalent fraction का ही मेथड यूज करेंगे. मीन्स डिनोमिनेटर के साथ में न्यूमरेटर भी चेंज होगा, क्योंकि हम सिर्फ न्यूमरेटर नहीं चेंज कर सकते. देयरफॉर सेकेंड स्टेप आ जाएगी फाइंडिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दीज टू फ्रैक्शन. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? 3/7. नाउ टू मेक 7 35, डिनोमिनेटर को 35 करना है. So to make 7 35, what we have to do? 7 into 5 होगा 35. Now that same number has to be multiplied by in the numerator. 3 also will be multiplied by 5. 7 also multiplied by 5. So we get 3 5 is 15, 7 5 is 35. ये फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया. दूसरा फ्रैक्शन क्या था? 4/5 है. 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? We have to multiply that this 5 by 7. So we get 35. क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में 35 करना है. That's why I circled these two and this also by red. So it will be understood. So 4 also will be multiplied by 7. So we get here 7 4 is 28/35. So that is हमने डिनोमिनेटर सेम किया. डिनोमिनेटर क्या चेंज करना रहता है? It will be the LCM of the denominator. ये स्टेप्स हो गए. So we got 15/35, 28/5. These are the like fractions. Equivalent है, means value इनका वही होने वाला है. अगर इसको हमने reduce किया, so it will be 3/7 होंगे. इसको reduce किया, it will be 4/5. यानी इसको 5 से divide किया, numerator और denominator को, तो हमको 3/7 मिलेगा. इसको 7 से divide किया, numerator और denominator को, so 4/5 मिलेगा. Means we have found a equivalent fraction for these. And we have made the denominator 35, therefore it becomes equivalent fraction and they become like fractions. Let's take one example जिससे हमको वो मेथड और अच्छे से समझ में आ जाएगा. These two are the steps. LCM of the denominator and equivalent fractions find करना, so we get the like fractions.
So we are here actually converting unlike fraction to like fraction. Unlike to like कर रहे हैं हम लोग. Here 2/15 and 1/5 denominators are not same. So to convert it, first we have to find the LCM and then we have to make them equivalent fractions. उसके equivalent fraction. LCM find करना ना. पिछले क्वेश्चन में थे हमारे पास 3/7 and 4/5 था. हाँ, यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो भी मैं बता दूँ. फर्स्ट थिंग फाइंडिंग एलसीएम. एलसीएम कैसे निकालते हैं? 5 and 15 का एलसीएम निकालना है. सो दिस मेथड वी हैव सीन. दिस इज कॉल्ड द डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड. यहाँ पर 5 and 15 का कॉमन फर्स्ट थिंग पहले किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा. 5 is also divisible by 5. 15 is also divisible by 5. So this will be 5 1s and 5 3s. Then this is 1, so this will be 3 1s. 5 into 3 is LCM of 15 and 5 will be 15. 5 3s. यहाँ पे लिख सकते हैं if you want 5 3s is 15. Now here I have used this method because 15 and 5 is having HCF more than 1, but here 7 and 5 is having HCF 1. In that case, जब HCF of the denominator is 1, we directly multiply that we did 7 into 5, directly multiply here. Here the HCF is not 1, it is greater than 1. Therefore, we have used this method. So that's the difference. Next thing, same है. This is the LCM. 15 is the LCM. So डिनोमिनेटर में 15 करना है. यहां करने की जरूरत है क्या? चेंज नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी 15. सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग हियर, इट इज ऑलरेडी 15. सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2/15 and the second one is 1/5. In this place, in this denominator we need 15. So we need here, we multiply this 5 by 3. Numerator will also be multiplied by 3. Always remember, अगर कुछ भी चेंज आप न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कर रहे हो, so same number we have to multiply with the, if we have multiplied the denominator by a number, that same number will be multiplied to numerator. Or in other case, if you have multiplied 1 by a number, that is numerator by a number, same number you have to multiply with the denominator. So here you get 3 1s is 3, 3 5s is 15. So here denominator also we got 15. So therefore this 2 and this 2/15 and 3/15 they become like fraction. And remember again I am saying 1/5 and 3/5 they are equivalent, means they are same value है. जैसे हमने स्टार्ट में देख चुके हैं, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं. So that's how we convert like fraction to unlike fraction to like fraction.